Today we'll be starting about suspensions. तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे एंड एवरीथिंग अबाउट सॉल्यूशंस. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट सस्पेंशन. सबसे पहले सस्पेंशन की डेफिनेशन लिखें. अ सस्पेंशन is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not do not dissolve but remain suspended but remain suspended throughout the bulk of medium. Throughout the bulk of medium. तो देखते हैं, जैसे हमने सॉल्यूशन में कह रहा था, सॉल्यूशन अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाए तो उसमें जो भी हमारे सॉल्यूट होता था वो क्या था, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था. सॉल्यूट वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. हर इसकी क्या थी, दैट हैड सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. इट्स कॉम्पोजिशन वाज सेम थ्रू आउट. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पार्ट में होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दूसरे पार्ट में भी होंगे. सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड have, first of all, a little bigger particles and they are freely suspended in the bulk of medium. And also there is no general rule कि किस जगह पे कितना ज्यादा. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेम थ्रू आउट होगा. उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितने टाइम तक उसे छोड़ रखा है, प्रॉपरली मिक्स्ड है नहीं है. so its concentration can change. ठीक है, this is the suspension. सर में कोई समझ नहीं आया, मतलब कि सस्पेंडेड रहते हैं बल्क में लेकिन सर डिसॉल्व नहीं होते. एक सेकंड, चलो आगे बढ़ते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं कुछ. पेंट्स paints are example of such suspensions. Or milk of magnesia, milk of magnesia, then lime water. Lime water is calcium hydroxide. This is also called calcium hydroxide. Next, or bleaching powder. Bleaching lime water भी calcium hydroxide and water. सारे सिस्टम इन वाटर, उनका मैग्नीशिया अपने आप में एक सस्पेंशन. सर ये लाइम वाटर अलग होता है? ये लाइम वाटर एक केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सॉल्यूशन या फिर इनसॉल्युबल सब्सटेंस. इनसॉल्युबल मतलब समझते हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्स insoluble in water. अगर कोई चीज insoluble in water है, it forms a precipitate and hence called suspension. तो जितने भी हमारे वाटर में insoluble चीजें होंगी
अगर कोई चीज की पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं, मतलब वाटर के साथ सोल्यूशन नहीं बनाता है, तो क्या बनाएगा? सस्पेंशन बनाएगा। सस्पेंशन बनाएगा बिकॉज इट फॉर्म्स समथिंग कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट आपको वर्ड पता होना चाहिए, यू विल बी यूजिंग इट इन सीनियर क्लासेस। ये लिख लो। नाउ लेट्स राइट डाउन द properties of suspension. First, suspension is a, ये हमें ऑलरेडी पता है, suspension is a heterogeneous mixture. Next, the particles of suspension are so large in size, they are more than 10 to the power minus 5 centimeter or 10 to the power minus 7 meters. Basically more than 100, more than 100 nanometer निकल गए तरीके। अच्छा, सॉल्यूशन के कितने छोटे होते थे? लेस देन सर 1 वन nanometer, नैनो and this is greater than 100 nanometer, तो ये इतने ज्यादा बड़े होते हैं, they are so large in size that they are visible to the naked eyes। तो ये इतने ज्यादा बड़े होते हैं, सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख पाते थे, लेकिन ये इतने ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं जिसे हम नॉर्मली भी देख सकते हैं। तो नो मतलब अगर हम कोई सस्पेंशन देखेंगे तो वी कैन वेरी स्पेसिफिकली सी इट्स पार्टिकल्स। नेक्स्ट, the particles of suspension are so large in size, greater than 100 nanometer. नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा स्कैटरिंग की बात करेंगे अब। तो जैसे हमने जिस जिस सीक्वेंस में हमने सॉल्यूशन के पॉइंट्स लिखे थे, उसी सीक्वेंस में हम इसके पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिख रहा था टाइप ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन में, तो इसमें टाइप ऑफ मिक्सचर इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। देन हमने लिखा था उनका साइज ऑफ पार्टिकल्स, इसमें ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें लिखा था हमने अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सॉल्यूशंस डू नॉट स्कैटर लाइट, बट सस्पेंशन डू स्कैटर लाइट। तो सस्पेंशंस, yeah, the particles of suspension scatter a beam of light, scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. What happens is, अगर हमारे पास एक सस्पेंशन है, तो उसके पार्टिकल्स बिग इनफ होते हैं कि अगर उसके थ्रू अगर हम वाइट लाइट पास करते हैं, अगर हम लाइट पास करते हैं उसके थ्रू, सो व्हाट हैपेंस इज, अगर हम लाइट उसके थ्रू पास करते हैं, अगर हम उसके थ्रू लाइट पास करते हैं, मे बी थ्रू अ टॉर्च और एनीथिंग, व्हाट वुड हैपन इज उसका पाथ विजिबल हो जाता है इनसाइड द सॉल्यूशन। ये विजिबल क्यों होता है? बिकॉज दे स्कैटर लाइट। दिस इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? इतने बड़े पार्टिकल्स है उसके, दैट जब उसके थ्रू लाइट हम पास करेंगे तो वो क्या होंगी? स्कैटर हो जाएगी एंड लाइट का हमें पाथ दिखने लगेगा।
The particles of suspension settle down if left undisturbed for some time. This means that it is unstable. याद है हमने सोल्यूशन में पढ़ा था कि वो स्टेबल है, मतलब उसके पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं होंगे, नो मैटर आप कितनी भी देर के लिए उन्हें छोड़ दो। बट सस्पेंशन में क्या होगा, अगर हम उसे ज्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे तो वो उसके सारे पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, सो ऑल द पार्टिकल्स वुड इवेंचुअली, अगर वो घूम रहे हैं, एंड इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट विल settle down. After some time it will settle down due to the action of gravity or towards the bottom. Okay, next point. The particles of suspension do not pass through the filter paper. तो हमने सॉल्यूशंस में डिस्कस करा था, अगर हम फिल्टर पेपर रखेंगे और उससे सॉल्यूशन पास करेंगे तो उसके पार्टिकल्स पास कर जाएंगे, मतलब कब फिल्ट्रेशन नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हमें शुगर सॉल्यूशन के में से शुगर हटाना है एंड वाटर हटाना है, तो हम फिल्ट्रेशन से तो नहीं हटा सकते। फिल्ट्रेशन पता है तुम्हें क्या होती है, यूज अ फिल्टर पेपर एंड देन आप उसमें कोई भी लिक्विड डालते हो या फिर एनी सब्सटेंस एंड यू सी कि क्या जो दूसरा बिगर पार्टिकल्स है वो उसमें से सेपरेट हो जाए। सस्पेंशन में ये पॉसिबल है। मान लो देयर सस्पेंशन विद सम वाटर एंड अनदर थिंग, तो हम फिल्टर पेपर के थ्रू जब उसे पास करेंगे तो जितने भी हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंशन के सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, वो सारे सेपरेट हो जाएंगे एंड वील गेट द अदर लिक्विड आउट। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द सेपरेशन मेथड, सो जो कि सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन पे काम करेगा। क्यों सस्पेंशन पे काम करेगा? बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर बिगर। ठीक है, सर सस्पेंशन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते सस्पेंशन के काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, अभी हमने लिखे तो ये देखो, ये सारे सर? वो हो सस्पेंशन सकता है कि सर हमने वाटर में डर्ट मिला दिया। हम, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट, suspensions are either opaque or translucent. जब हमने सोल्यूशन डिस्कस करे थे तो हमने बोला था वो जनरली वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली अलॉयज एंड जो सॉलिड्स हो गए, तो जनरली सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन सस्पेंशन जनरली ओपेक होते हैं या ट्रांसलूसेंट होते हैं, मीनिंग उनके थ्रू क्लियरली नहीं दिख सकता। ठीक है, ट्रांसलूसेंट पता है ना तुम्हें, ओपेक मतलब नो लाइट कैन पास, नो लाइट कैन पास। फॉर एग्जाम्पल अ सॉलिड, अगर टेबल लो, टेबल के थ्रू कोई लाइट पास कर सकती है? नहीं, तो इट इज ओपेक। ट्रांसलूसेंट, partially light can pass। तो बेसिकली सारी लाइट पास नहीं होगी, मान लो आधी लाइट पास हो गई, आधी नहीं हुई। ठीक है, सो दैट इज अ थिंग व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट इज मेजॉरिटी लाइट पास थ्रू हो गई, 100% लाइट तो किसी चीज के थ्रू पास नहीं हो सकती, लेकिन मेजॉरिटी लाइट अगर पास हो जाए तो ट्रांसपेरेंट। अगर मेजॉरिटी थोड़ी सी कम लाइट हो, समवेयर इन द मिडल, इट्स ट्रांसलूसेंट, एंड अगर बिल्कुल लाइट पास ना हो, सो इट इज। We have written down all the properties
अगर वो ऑब्जेक्ट है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 है, पढ़ेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसी सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं होने से ही लाइट 100% पास कर सकती है। तो मोमेंट यू इंट्रोड्यूस एनीथिंग, लाइट will get a little bit absorbed, a little bit reflected, and other things. There is nothing that can transfer 100% of it. चलो ठीक, ये लिख लिया सबने। अब हम करेंगे कोलॉइड। तो हमने दो एक्सट्रीम केसेस कर लिए। अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे हो और थॉरली मिक्स्ड हो तो सॉल्यूशन, और अगर पार्टिकल्स बहुत बड़े हो, मतलब 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स, क्या हो गए, सॉल्यूशन। 100 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स हो गए सस्पेंशन। बट देर इज समवेयर इन द मिडल कोलॉइड, जिसके पार्टिकल्स ना बिग इनफ है टू बी कॉल्ड सस्पेंशन, ना स्मॉल इनफ है टू बी कॉल्ड अ सॉल्यूशन। नॉट स्मॉल इनफ, नॉट स्मॉल इनफ टू बी, नॉट स्मॉल इनफ टू बी सीन विद नेकेड आईज, ठीक है। तो मतलब इतने ज्यादा बड़े भी नहीं है, स्मॉल इनफ नॉट टू बी सीन विद नेकेड आईज, एंड बिग इनफ टू स्कैटर लाइट, एंड ऑल्सो स्मॉल इनफ टू बी स्टेबल। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इवेंचुअली। बट अभी के लिए पहले इसकी डेफिनेशन ले। The solutions in which the size of particles is between those of, यहाँ पे कुछ बच्चे सॉल्यूशन से कंफ्यूज हो गए, सॉल्यूशन तो है नहीं, बट हम ट्रू सॉल्यूशन से रेफर करते हैं सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे आप rather than सॉल्यूशन आप मिक्सचर भी लिख सकते हैं। Mixtures in which the size of particles is between those of true solutions and suspension 1 nanometer 100 nanometers। तो क्या बोलेंगे हमसे, आर कॉल्ड colloids और colloidal solution। Okay? Due to their small size, अभी सस्पेंशन तो स्मॉल है, they appear to be homogeneous। ऐसा लगता है, सिर्फ ध्यान रखना, they appear to be homogeneous but they are heterogeneous। तो याद रखना, जब भी कोलॉइड आपसे पूछा जाए किस टाइप का मिक्सचर है, दे आर नॉट होमोजेनस, दे आर हेटेरोजेनस। ठीक है, in both solution and suspension we had solute and solvent, right? But colloidal में नहीं होता है solute या solvent। colloidal में there's something called disperse phase and dispersing medium। सो सॉल्वेंट जैसा डिस्पर्सिंग मीडियम होता है एंड सोल्यूट जैसा डिस्पर्स फेज होता है। तो जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड होंगे एक कोलॉइड में, वो क्या होंगे, डिस्पर्स फेस्ड एंड नॉट सोल्यूट। एंड जो जिसके अंदर वो डिस्पर्स्ड होंगे या फिर जिसके अंदर वो मिक्स्ड होंगे, जो हमारा जनरली सॉल्वेंट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम। पहले दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो
The solute-like component, the solute-like component which has been dispersed, which has been dispersed or distributed throughout in solvent-like in a solvent-like medium called the disperse phase. और एक और नाम होता है इसका disperse phase और discontinuous phase. Next, तो disperse phase की ये definition है. Dispersing medium have the solvent-like medium in which dispersed phase dispersed phase has been distributed or dispersed called dispersion medium or continuous phase. इनकी definitions हमने. तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ colloids. Again, in a similar way, solids. अगर पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं dispersing medium, तो dispersion medium लिख लो. Dispersion medium dispersion medium, then dispersed phase. तो अगर सॉलिड्स हमारा डिस्पर्जन डिस्पर्स फेज अगर लेते हैं हम सॉलिड्स को, ठीक है, तो पहले सॉलिड्स लेते हैं और सॉलिड्स इन सॉलिड्स, ठीक है. इसके एग्जांपल्स होंगे जेमस्टोन्स, कलर और मिल्की ग्लास. तुमने डिजाइनिंग ग्लासेस देखे कभी? डिजाइनिंग ग्लास देखे होंगे मे भी तुमने. तो कुछ शीशे होते हैं ना, जैसे फैंसी से दिख रहे होते हैं थोड़े से, तो कभी कभी मेकअप वाली जगह पे लगे होते हैं, बॉर्डर्स बने होते हैं जिन चीजों के. काफी जगह कुछ ग्लासेस भी होते हैं, तो वो मिल्की ग्लास होते हैं. So again, they are mixture of two solids and they are basically a colloid. ठीक है, मतलब वो प्रॉपर होमोजेनस नहीं होता है बिकॉज उसे प्रॉपरली मिक्स नहीं करा जाता है, इंडस्ट्रियल वैसे छोड़ा जाता है. तो दे कैन बी अगेन एग्जैक्टली क्या होता है मे बी बाद में डिस्कस करेंगे. आई नीड टू फिगर दैट आउट. नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड्स डिस्पर्स फेज इन लिक्विड्स. डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड. सो बाय द वे से हम बोलते हैं सॉलिड एज वेल.
क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसे पूरा नाम सॉल्यूशन लिखते हैं, हम सिर्फ सॉल्व लिखते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्व, ये हो जाएगा सिंपली सॉल्व, टाइप बोल सकते हैं आप इसका। इसमें वी कुड हैव सिंपल एग्जांपल लाइक what muddy water, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमने करा था, और ब्लड, आजमा। बेसिकली जो हमारे सॉलिड्स, द थिंग इज कि काफी सारे सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है वो ब्लड से होता है, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड्स होती है जो उस लिक्विड मीडियम में ट्रैवल करती है, बट इट फॉर्म्स अ कॉलॉइड। ये पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं है कि सस्पेंशन, तो ब्लड इज ऑब्वियसली नॉट अ होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट 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 करेंगे हम गैसेस, सॉलिड्स इन गैस known as a solid। पढ़ेंगे हम इनका नाम कैसे कैसे आता है। ये टाइप है जो मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ ना, ब्रैकेट ब्रैकेट में टाइप, इसका टाइप क्या होता है, नाम क्या देंगे इसे। तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं हम। स्मोक, स्टॉव, देन एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल। स्मोक में पार्टिकल्स, कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, या सॉलिड्स। इसीलिए उसको जो ब्लैक स्मोक हो जाती है इसलिए होती है। डस्ट स्टॉर्म, देन एग्जॉस्ट। हम बात करेंगे लिक्विड्स की। लिक्विड एंड सॉलिड्स। Liquids and solids are known as gel. Oh, jelly, cheese, butter, curd, ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ जेल है, जो कि क्या होते हैं, colloid in which disperse phases liquid, dispersing medium is solid. Next, liquids and liquids. Emulsion बुलाते हैं, इसका नाम होता है emulsion। Examples: तो इसमें सर टाइप्स के सर पेंट्स भी आ सकते। milk, um, cream, काफी rhythm। Next, liquids and gas. Aerosol, fog, mist, and कुछ sprays भी होते हैं। At last we have gas in solids. This is solid foam, and foam बोला। We have examples like foam, engine foam तो पता है सबको क्या होता है, rubber, sponge, bread even। Gas in liquids. This is simply called
vapor, solid form, and gas and liquidous form. We have whipped cream, my favorite example of this. क्रीम क्योंकि हम खुद बनाते हैं, उसे कंटिन्यूअसली whip करते हैं, इससे उसमें क्या ऐड हो जाती है, एयर ऐड होती जाती है, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी हो जाता है. सो वी आर मेकिंग बेसिकली फॉर्मिंग अ कोलॉइड. सो तो ये आपने देखा जब आप सबको कंटिन्यूअसली स्टर करते हो, एंड या फिर कभी तुमने सर्फ को घुमा रखा होगा, तो वो जो कलेक्ट हो जाते हैं बबल्स, स्टार्क जो बबल्स का सेट हो जाता है, वो क्या है, वो भी अगेन फोम का टाइप है, विच इज अ colloid of gas. And next shaving cream, that is also good example. अच्छा, एक लास्ट टाइप रह जाता है. हमने सब कर लिया, solids and solids, solids and liquids, solids and gas, liquids and solids, liquids and gas, gas and solids, gas and liquid. सर बट gas सॉलिड। and gas रह गया, gas and gas रह गया. gas and gas इसलिए नहीं लिखते हैं, they do not form colloid, they do not form colloid. Two gases, if mixed together, will always form a homogeneous mixture या फिर solution. तो अगर दो गैसेस को आप मिक्स करोगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, वो कभी कोलॉइड या सस्पेंशन नहीं बना सकते. इसीलिए देयर इज नो कोलॉइड इन विच गैस इज द डिस्पर्स फेज एंड गैस इज द डिस्पर्सिव. सिर्फ इसीलिए और सिर्फ इसलिए सिर्फ 8 टाइप्स के हमारे पास. On the other hand, solutions were of 9 types.